Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So this is our third video in the series of motivation. We have already discussed motivation, meaning and types, and in second video we have discussed a very important theory of motivation, that is Maslow's need hierarchy theory. In this video we are going to study another theory, which is Herzberg two-factor theory. It is also very important popular theory in the field of motivation and used by managers also to understand how to motivate their employees. So before we move on to this theory, I would request you that if you are watching my videos and you have not subscribed yet, please do subscribe. It will help me to understand that you are liking my content and motivate me to make such more videos. And if you have already subscribed to my channel and liking my videos and liking my work, please do not forget to like and share my channel. So let us move now to Herzberg two-factor theory. मैस्लोस थ्योरी अगर आपको याद है तो हम वहाँ पर क्या था, एक पिरामिड सा था जिसमें हमने ह्यूमन नीड्स को डिवाइड करा था 5 स्टेजेस में, एंड हमने बोला था कि ये 5 स्टेजेस एक हायरार्की फॉर्म करती हैं, नीचे से ऊपर जाती हैं, एंड जैसे जैसे हमारा नीचे का नीड पूरा होता जाता है वी मूव ऑन टू हायर नीड्स. Herzberg says that there are 2 factors you need to understand and apply them accordingly for motivation. Now what are these 2 factors? The theory is little tricky. If you understand it properly as a student you will be able to write it anywhere, but if you do not understand and mug up you can confuse between the 2 factors and their meaning. So please see the video very carefully and understand the meaning of these 2 factors. ये 2 factors हैं क्या? And if you are attempting a case based question it will be very helpful to you. So 2 factors are hygiene factors and the motivating factors or the motivators. Now what Herzberg said, he said that generally if we make a scale we have dissatisfaction on one side and satisfaction on another side. So you have dissatisfaction and satisfaction, generally यही होना चाहिए, but he says no, this is not a linear scale. जो हाइजीन फैक्टर हैं अगर वो होते हैं आपकी लाइफ में तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, लेकिन अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आप डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे. सो दीज आर द हाइजीन फैक्टर्स which creates no satisfaction or motivation if they are present, but if you take away or if they are not available then you will be highly dissatisfied. And second case is motivators. What are the motivators? These are those factors जिनके होने से आपको satisfaction या motivation मिलती है, लेकिन अगर वो factors नहीं होंगे आपकी लाइफ में तो आपको dissatisfaction नहीं होगी, you will be neutral. तो क्या होगा, आपको सेटिस्फैक्शन या आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, और इन अदर वर्ड्स आपको डिससैटिस्फैक्शन भी नहीं है, यू आर न्यूट्रल. सो हियर यू हैव नो dissatisfaction. So let us understand a bit more. Hygiene factors are the factors whose absence leads to dissatisfaction but their presence has no perceived effect. On the other hand motivators mean जिनकी presence आपको motivate करती है लेकिन जिनकी absence से आपको dissatisfaction नहीं होती, right? जो मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी थी, अगर हम बात करें तो उनकी जो बेसिक नीड्स थी और नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी नीड्स थी, देन सोशल नीड्स थी एंड एस्टीम नीड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट आर ऑल पार्ट ऑफ द हाइजीन फैक्टर्स, एंड द हायर लेवल नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर द मोटिवेटर्स अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग. सो अगर आप एक कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, तो अगर आपको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, सैलरी बेसिक मिल रही है, आप लोग आपसे बात करते हैं, सोशलाइज करते हैं, यू हैव अ गुड सोशल सर्कल and you have a certain status because of your position and title, all these things will not motivate you according to Herzberg, because all these things are the basic standard things which you as an employee will expect. तो ये आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं. सो इफ़ यू गो टू एन ऑफिस टुमारो और आपको बेसिक बैठने का जगह भी ठीक ना मिले तो आप डिससैटिस्फाइड होंगे, लेकिन अगर आपको एक कैबिन दिया जाए, उसमें एसी हो, बैठने का अच्छे से जगह हो, कंप्यूटर हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड दैट ओ माई गॉड कितना अच्छा है और आप मोटिवेट होकर काम करेंगे. नो. सो दैट इज़ हाइजीन फैक्टर. अगर वो होंगे
तो आप न्यूट्रल हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे. एंड देन देयर इज सेकेंड कैटेगरी मोटिवेटर्स, विच मीन्स अगर वो होंगे तो आप मोटिवेट होंगे, लेकिन अगर वो नहीं होते तो आप नाखुश भी नहीं होंगे, आप डिससेटिस्फाइड भी नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैनेजमेंट रिकॉग्निशन देती है, चैलेंजिंग जॉब देती है, इफ यू आर एबल टू गेट योर maximum potential in a particular job, you will be happy, satisfied and motivated. But if you are in a company and you are not getting any challenging job, कुछ आपके पास new task नहीं आ रहा, so you are not dissatisfied. So these are motivators, and the first category is hygiene factors. So in short, motivation factors are the factors that motivate people to work harder, and hygiene factors are the factors that demotivate when they are not present. लेकिन present होंगे तो motivation नहीं होगी. Both of them work together to help the employees to achieve the goals. So if these things come in your exam कि achievement, growth, responsibility, advancement, recognition क्या है, hygiene factor की motivation factor, these are the motivation factors. And company policy, salary, working condition, your status, supervision, job security are hygiene factors. आपने पढ़ा, आपने डिग्री लिया एंड उसके बेसिस पे आपको जॉब मिली, यू हैव अ सर्टेन स्टेटस बिकॉज ऑफ दैट, सो यू हैव अर्नड इट. इट इज़ नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू कि आपको आपके जॉब आपको स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब मिल रहा है. बट अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप डिससेटिस्फाइड होते हो. सो दीज आर द हाइजीन फैक्टर्स. ये आपके एम्प्लॉय को टिके रहने के लिए चाहिए, और सेकेंड कैटेगरी जो है वो उसको आगे फर्दर मोटिवेट करता है. राइट. सो बेसिकली हाइजीन फैक्टर्स क्या डिटरमाइन करते हैं, डिससैटिस्फैक्शन, और मोटिवेटर्स डिटरमाइन करते हैं सेटिस्फैक्शन. और ये दोनों एक ही स्केल का भाग नहीं है, दीज आर पार्ट ऑफ लाइक टू डिफरेंट स्केल्स. What are the shortcomings of this theory? You can understand जिस हम इस theory में बात कर रहे हैं. So we are talking about, we are assuming that correlation exists between satisfaction and productivity, but we are not taking into account productivity. So I am assuming that if you will be motivated and satisfied, you will be a productive worker, which is not really necessary. Second is, we are not talking about how to measure the satisfaction. ये satisfaction आपको है कि नहीं है, हमें कैसे measure करें. And also you can understand that satisfaction and dissatisfaction could change from person to person and situation to situation, and it cannot be generalized. For example, if I am working in a company and I am having very poor working environment, if I go to another company which is giving me a separate cabin and good working environment, my own personal laptop, then I may feel motivated also with such basic things also, because I have worked in a poorer environment. So hygiene factors could be also motivators for people. It depend on person to person and situation to situation. So this was Herzberg two factor theory. Two factor theory क्यों? क्योंकि इसमें दो factors हैं. कौन से factors? Motivators and hygiene factors. Hygiene factors maintain you, and motivating factors provides you satisfaction, and these are two different scales and not part of one linear scale. I hope the topic is clear to you. I hope the theory is clear to you. If you have any doubts, please feel free to leave in the comment section below. Don't forget to subscribe to the channel and hit the bell notification, so that when I post the other video, next video, you get the notification first. So happy learning, keep learning, and have a good day.